my dear learners and welcome to this class. हम लोग 30 days का एक चैलेंज शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज का. एंड if you've been waiting for this perfect moment to improve your English, this is it. Okay, 30 days, 30 small habits we are going to learn and we're going to build this confidence in you. अब क्या होता है ना, बहुत सारे लर्नर्स इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ग्रामर बुक्स उठा लेते हैं बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी वोकैबुलरी लिस्ट्स खोल लेते हैं या कोई लॉन्ग कोर्सेज खोल लेते हैं. लेकिन एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट करना इज नॉट रियली बेनिफिशियल. ट्रूथ ये है कि सिंपल टास्क से शुरू करना ज़रूरी है. यू इम्प्रूव व्हेन यू स्पीक. पहला काम है लिसनिंग, दूसरा काम है स्पीकिंग. अभी उतना तक हम लोग सीमित रखेंगे. So daily, even for 5 minutes, this challenge is actually built for that. Okay, micro tasks, छोटी छोटी tasks करेंगे, real life speaking के prompts होंगे और confidence building routine हम लोग setup करेंगे. By the end of 30 days, अगर आप regular रहते हो, you will not only speak better, but you will also start thinking in the target language. तो आज का मिशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. बिफोर यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट नो व्हाई you want to speak in that language. So here is your day 1 speaking task. Record a 20 to 30 seconds का वीडियो या ऑडियो, जो भी आपको मन करे, अपने आप का answering this question. Why do I want to speak English confidently? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देती हूँ that what are the things that you can say. For example, I want to excel in interviews, or I want to express myself without fear, or I want to present confidently in college or office. There is no right, no wrong answer. It is just your truth. अपने अंदर अपने आप से ये honestly question पूछो and just speak it out loud. ठीक है. अब इसके अलावा मिनी प्रैक्टिस ऑल्सो. लेट्स वार्म अप अभी. ठीक है. रिपीट आफ्टर मी स्लोली एंड वेरी क्लियरली. सबसे पहले, आई एम स्टार्टिंग माई इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी टुडे. आई ट्रस्ट माई प्रोग्रेस even if it is small. Speak it out loud. I will show up every day for the next 30 days. My voice matters. So speak up. ठीक है? You've already spoken English today. Even if it is for a few seconds, this is how we start. Every day in this challenge, you will do 3 things. Speak. Number 1, guided prompt मिलेगा मेरे से, आप उसको repeat करो. Listen. Listen a short audio or video in English. If you're listening to mine, very good. Reflect. 1 sentence in a journal. एक sentence reflection के लिए. So today's reflection sentence is, English will open doors for me because, please fill in the sentence. English will open doors for me because. So write your answer after this video. Just write it down. 3 चीजें करनी है, बोलना है, सुनना है और एक sentence लिखना है आपने. Okay, so here's your homework for day 1. Task 1 is speak your why. Privately आप चाहे तो मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं. You do not need to post it anywhere. It's for you. Task 2 is shadowing practice. Repeat. Repeat a short clip from your favorite movie or your favorite song or anything. Just repeat. Third is your journal prompt. Imagine. So when I imagine myself speaking fluently, I feel. कोई भी एक सेंटेंस हम रोज करेंगे, वो आपने लिखना है. ठीक है. राइट ऑनेस्टली, नोबडी इज जजिंग यू. ठीक है. सो दिस इज जस्ट डे 1. You've taken the most difficult step, starting. So if you're joining this challenge, comment day 1 done. I want to see. So I'll see you tomorrow for day 2, where we'll build your foundations of pronunciation. Until then, keep speaking, keep growing, and keep believing in yourself. This is Annie signing off for this day, and welcome on Speak Up with Annie. Let's make these 30 days life challenging.
Share it with others, and if you liked it, please hit the like button. And also for my online users, comment. Thank you. See you.